चाचा चाची पास रहते थे गांव में, होटल में बोलते थे काम करने, तो पढ़ नहीं पाया वहाँ से। कम पढ़ा लिखा था, होर्डिंगों पे 30-30 फुट ऊपर चढ़ के धूपों में मरा हूँ। 5 रुपये हफ्ता मिलता था। मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी। कोई 10 रुपये दे दिया, किसको मारना था उसको जाके हम लोग मारते थे। बहुत मजबूरी थी, खाना मिलता नहीं था। सकाळी चहा पिल्यानंतर संध्याकाळी जेवण भेटते की नाही याची सुद्धा आशा करणं मुश्किल होतं। जो भी पैसा था पिताजी के ऑपरेशन में लग गया। शिक्षण का कोई तरीका नहीं था मेरे पास उस समय। So, what can such a young man or woman with dreams fading from their eyes and hope fleeing from their heart actually look forward to? Is there no one who can help them restart their lives? No one who can give them that second chance? The story of Yuva Parivartan can be traced back to 1928. Against the backdrop of the freedom struggle, the then Premier of Bombay Province, Mr. B.G. Kher, happened to make a chance visit to a small and largely ignored part of what is now Bandra East, an area called Chamdewale Ki Wadi. He was appalled by the conditions he encountered there and ended up devoting much of his later life to uplifting the people of what would soon be called Kherwadi. In 1998, the legacy of his good work was passed on to his grandson in the form of an organization called Kherwadi Social Welfare Association. My wife and I took the bold step of quitting corporate life and trying to give back to society. We decided to conduct 2 professional surveys in the area of health and education. And we were shocked to find that 87% of all youth dropped out before they completed school. And yet there was nobody paying attention to them at all. This thought was the seed that would grow a movement. A movement for the betterment of the youth of first Kherwadi and then of India. A movement called Yuva Parivartan. Right from the beginning, the Khers set out clear, well-defined objectives for their organization. Yuva Parivartan would not be just another NGO doling out charitable handouts. Rather, it would be a professionally managed organization that would give disadvantaged youth who had dropped out of productive life all the vital skills to regain a foothold in society and transform them into self-sufficient members of their community. The first step was to give youth the ability to earn their own livelihood through vocational training. We have various courses like motor mechanic, AC refrigeration, wireman, home appliance repair, मेशनरी ट्रेनिंग कोर्स, त्यानंतर मल्टी स्किल आहे. nursing, beautician, mehndi, tailoring, English speaking, computer, fashion designing. Anybody who can read and write is welcome. हम लोग ऐसे समझते कि हमारा 10th क्लास से ही रुक गई है पढ़ाई, कुछ जॉब भी तो नहीं मिलेगा। तो उतने में युवा परिवर्तन हमारे इधर आ गया था। हम लोग यहाँ पर आए युवा परिवर्तन में, तो हम लोग को लगा कि हाँ हमारे आगे जिंदगी है। मी एक सिलाई प्रशिक्षण म्हणून ॲटम निवडला की याच्यात आपल्या आदिवासी भागात खरोखर परिवर्तन होईल। या गावात मशीन म्हणजे काय हे माहीत नाही किंवा कपडा कसा शिवला जातो हा अजूनही लोकांना माहिती नाही। तर खरोखर युवा परिवर्तन सिलाई प्रशिक्षण घेतल्यानंतर आपला पण फायदा आणि समाजाचा पण फायदा होईल। हाथ में कोई हुनर रहेगा, कोई भी काम पे लगाएगा ना। फिर मैं वायरमैन का कोर्स लिया। इथे 3 महिन्याची थिअरी झाली, त्यानंतर मला 6 महिने ट्रेनिंगला पाठवलं हॉस्पिटलमध्ये। काय कसं ऑल्मा करायचा, कशी थापी मारायची, कशी प्लास्टर मारायचा, हे सगळं शिकायचं होतं मला। इथे माझी इच्छा म्हणजे पूर्ण झाली। और आज हमारा डीटीपी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि आज अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो इतनी स्पीडली मैं हैंडल कर सकता हूँ। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ली, हार्डवेयर के बारे में जानकारी ली और आज बहुत कुछ मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है।
But while the vocational training that Yuva Parivartan gave was a good first step, by itself, it was still not enough to transform young men and women into productive members of society. Realizing the different type of families that these children come from, we decided that life skill is an important component of vocational training. We decided to do community work around our centers from the very beginning. For those students who do not want to join, we have a Yuva Parivartan club where they could carry out socially useful interventions and programs in their own communities. Taking its agenda of giving youth a second chance at life to its logical conclusion, Yuva Parivartan then worked with well-intentioned companies and put into place a comprehensive placement program. We are moved and inspired, so we thought we should also be partners with them. तो उनकी फीस जो है हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, and definitely we would make a placement. We set up a training program, and then when they are certified, we help them get jobs. Once Yuva Parivartan tasted success in keeping youth away from dangerous life choices, it turned its attention to helping rehabilitate those who had already gone astray through the Yuva Parivartan prison program. प्रिजनर लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करता। ये जो युवा परिवर्तन संस्था है, ये सोचती है कि ऐसे लोगों को हम एक्सेप्ट करें और इन्हें ऐसा स्थान दिलाएं जिसकी वजह से ये भी शान से जी सके। Soon, the Yuva Parivartan movement spread to rural Maharashtra as well. We've started the integrated rural development program, the purpose of which is to have vocational courses for rural youth spread over 4 basic fields. One is improved agriculture practices. त्यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्या या पद्धतींचा वापर केल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात वाढ होते. Then there is water resource management. The third area is livestock. Then we are also getting into training of women through self-help groups. It would benefit the whole economy of the village. Today, in 2009, Yuva Parivartan has 30 centers and has already touched the lives of 30,000 young Indian men and women, giving them the one thing they have so desperately needed, that second chance. अब मैं जाके एनिमेशन लाइन में हूँ और अपने 2 ब्रांच खुद के कर लिए हैं। आज तो मुझे हज़ारियों से मिलता है। 3000 रुपये कमाता हूँ महीना। मैं कुछ सोच अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ मैं। आज मैं ये तरक्की पे आ गई कि घर के अंदर भी बैठ के बोझ तो किसी के ऊपर नहीं हूँ। युवा परिवर्तन में आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन है ना। But even with all this, for Yuva Parivartan, the journey is far from over. Yuva Parivartan has a very big dream to have a national footprint. So we are willing to teach other NGOs how to start and operate these centers. Imagine 100 NGOs coming forward in half a dozen states. And we're saying if you can achieve 100 centers in 3 years, then we know that after 3 years they'll be able to achieve 3,000 centers. Now if we want to do nation building, this is what we have to do. Get our youngsters to absorb skills so that they can contribute to the economy. युवा परिवर्तनाचं अनमोल म्हणतात ना, असं काम आहे. यासाठी अनमोल शब्द पाहिजे. एक जननी या नात्याने मी मान्य करेन. त्यांनी मला हे वेगळं आयुष्य दिल्याबद्दल मी खूप त्यांची आभारी आहे. ज्यांना शिकण्याची इच्छा आहे परंतु गंभीर परिस्थितीमुळे ते शिकू शकत नाही, अशा व्यक्तींसाठी संस्था म्हणजे एक वरदान देवाने दिलेली आहे. सपना का साकार बोले तो युवा परिवर्तन ही है. युवा परिवर्तनने मला माझं खरं स्वप्न दिलं माझ्या हातामध्ये. युवा परिवर्तन में शामिल हुई, ये मेरी खुशनसीबी है. अभी मैं अपने लिए नहीं जी रही हूँ, अभी मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ. मैं जब काम करूँगी तो उसको अच्छी स्कूल में डालूंगी, फिर वो कुछ अच्छा बनेगा, तब कहीं जाके मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जिंदगी जी है.
आता मला खूप जगावं असं वाटतं. आता मला असं वाटतं की मी काही ना काहीतरी करू शकते युवा परिवर्तन. जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया था. जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया था. इसने मुझे सिखाया है, इसने मुझे उठाया है, कामयाबी की बुलंदी पर मेरा नाम लिखवाया है. हो जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है. जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है. खुशियों को लौटाया है, मंजिल तक पहुंचाया है. मेरे अंदर की ताकत को मेरी पहचान बनाया है. जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है. जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है. जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है.